Good evening. Good evening. Sound दे दिए. Sound पड़ गया ना? Sound. Hello. Hello. Yes, sir. Respond नहीं कर रहा. बच्चा तो बोले रहा है ये देखो बंद है यहाँ सुनिए खतरा बोलिए थे Hello. Yes, sir. हाँ ठीक. क्या पढ़ा रहे थे? Tea of Assam start करना था. क्या क्या कौन सा? Tea of Assam chapter. किसमें? फर्स्ट फ्लाइट में? हाँ. कौन चैप्टर? मैडम राइट्स द बस. ये स्टार्ट करना है. स्टार्ट करना है वो चैप्टर. चैप्टर नंबर 9. मैडम राइट्स द बस. ठीक. टी ऑफ असम स्टार्ट करना है. क्या? क्या? टी ऑफ असम. ओ यही चल रहा है. टी ऑफ असम स्टार्ट किए थे ना? नो सर, उसका बस इंट्रो चला था. अच्छा ठीक. ट्रीज भी बाकी है ना? ट्रीज. ये पोएम जो है ट्रीज ये भी बाकी है. ये भी बाकी है लेकिन पहले चैप्टर. ठीक है एक करके करते हैं. टी फ्रॉम असम शुरू कर. कपड़ा है. Glimpses of India, third part. Tea from Assam. We have already done 2 parts. First is a baker from Goa, second is Kul, and the third is tea from Assam. Just as Goa is known for baking business, Kurg is known for spices and coffee, and Assam is known for its tea garden. आसाम टी गार्डन के लिए जाना जाता है. ओपन एट पेज 85. लोकस की तरफ. In this chapter, we are going to study about Assam and its tea estate or tea garden. In this chapter, there are 2 characters, main characters, Pranjul and his friend Rajveer. Both are going to
Assam by train. Pranjal is a youngster from Assam. He is Rajveer's classmate. Both of them are studying in the same school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. And Pranjal has invited Rajveer. Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. During the summer vacation, Pranjal is going to his father, who is the manager in a tea garden there. He had invited his friend Rajveer to his house. Rajveer is very excited about the tea garden, which he will see there. Both of them are going by train. The train is at the station. As you have seen, at the station, as you generally see at the station, many types of vendors are moving hither and thither. They are hawking their goods by shouting loudly. A person selling tea is shouting, hawking tea, and saying like this: "Chai garam, garam chai." A vendor called out in a high-pitched voice. ऊंची आवाज में एक वेंडर चिल्लाया. He came up to their window and asked, "Chai साहब, चाय साहब." देखा है तुमने चाय बेचते हैं? हाँ, मुंह ऐट करके बोलेगा, गिलास आवाज निकालेगा दबा कर, ताकि सब लोग उसका. He came up, इधर भी बेचे चलता है तो चनाचूर गरम, सुना है आवाज? हाँ, वो 25-20 वर्ष से उसको देख रहे हैं बेचते हुए, सब लोगों ने देखा. इस तरह से आवाज लगा रहा है, उसी तरह से आवाज लगा रहा है वेंडर. He came up to the window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups." प्रांजल का दे दो 2 cup. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer said to Pranjal, "Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world?" "Whew!" exclaimed Pranjal. "Tea really is very popular." चाय really बहुत popular है. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Pranjal was busy reading his book, detective book, जासूसी book पढ़ने में लगा हुआ था. Rajveer too was an ardent fan of detective story. Rajveer also liked reading detective story, but at that time he was not interested in reading books. He was more interested in looking through the window. उसमें वह ज्यादा इंटरेस्टेड था खिड़की से बाहर देखने. But at that moment he was keener on looking at the beautiful scenery, because outside the train beautiful scenery attracted Rajveer's attention. It was the first time that he was going to Assam, and the beautiful scenery outside the train attracted his attention. So he was taking great interest in looking at the scenery through the window. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then इतना ग्रीनरी पहले नहीं देखा था. पहली बार आसाम जा रहा है. ये ग्रीनरी किसका था? टी गार्डन का.
But the moment he was keener on looking at the beautiful scenery, it was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. There, there were hills. There was a dense forest there. So against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Sea of tea bushes. चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ था। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक चाय की झाड़ियों का समुद्र जैसा दिख रहा, दूर दूर तक। ड्वार्फिंग माने छोटा करना, बौना करना। The tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. Tall, sturdy, छायादार वृक्ष थे। उनके अगेंस्ट में टी गार्डन, टी बुशेस कैसे लगेंगे? डॉर्फ लगेंगे, छोटे लगेंगे। तो among the tea plants, the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Who were the doll-like figures? They were women plucking the tea leaves. टी लीव्स को तोड़ने वाली औरतें होंगी जो डॉल-like figure की तरह घूम रही थी चाय बागान के बीच में। In the distance was an ugly building with a smoke billowing out of tall chimneys. Out of tall chimneys smoke was coming out of tall chimney. बड़े बड़े चिमनी था जिससे धुआं निकल रहा था कुछ दूरी पर। Hey, tea garden! Rajveer cried excitedly. Hey, tea garden! क्योंकि पहली बार देखा था तो एक्साइटेड है, देखो टी गार्डन। लेकिन प्रांजल तो वहीं पैदा हुआ था, कई बार देख चुका था, कोई आश्चर्य नहीं लगा। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Rajveer exclaimed with excitement, "Hey, a tea garden!" But his friend Pranjal did not respond to his excitement. उसके excitement का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a long time. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. Rajveer has come here after doing a lot of homework on tea and tea gardens. उसने कहा कि I have been reading as much as I could about tea. टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ता रहा। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. कोई नहीं जानता है कि चाय का आविष्कार किसने किया, किसने खोज की चाय की, लेकिन बहुत सारे लीजेंड्स हैं। लीजेंड्स कहते हैं पौराणिक कथाओं, पहले से जो कथा चली आ रही है टी के डिस्कवरी के संबंध में, उसने बताया। व्हाट लीजेंड्स? वो पूछा प्रांजल, कौन सा लीजेंड? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर who always boiled water before drinking it. एक लीजेंड जुड़ा हुआ है चाइनीज एम्पायर से, एक चीनी बादशाह से, जो पानी उबालकर पीता था। Who drank water after boiling it. At that time there was no gas stove, so water was boiled by burning branches of the tree or leaves of the tree. Dry leaves को जलाकर आग जलाया जाता था। A few leaves of the twigs कहते हैं छोटे ब्रांच को, burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. Once it so happened that a leaf which was being burnt fell into the water, and
and the leaf was boiled in the water and gave a delicious flavor to the water, which was drunk by the emperor. पत्ती पानी में गिर गया, उबल गया, तो वाटर को एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया, स्वाद दे दिया. राजा ने उसको पिया, बहुत अच्छा लगा. ही लाइक इट वेरी मच. इट इज सेड दैट दे वेयर टी लीव्स. कहा जाता है वही चाय की पत्ती थी, वहीं से सबको पीना शुरू कर दिया. ये फास्ट लीजेंड हुआ विच वाज रिलेटेड टू चाइनीज एम्पायर. तो प्रांजल कहा कि टेल मी अनदर, दूसरा बताओ. तो वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक भारतीय कथा भी है. बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक प्राचीन बौद्ध संत थे, बोधि धर्म. हिज नेम वाज बोधि धर्म. ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. आंख वाला जो ये जो ढक्कन होता है उसको काट दिया उन्होंने. आईलिड्स को काट दिया. क्यों काट दिया? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. व्हेन ही मेडिटेटेड ही फेल्ट स्लीपी, सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. His eye would not close if there would be no eyelids. Eyelids नहीं रहेंगे, आंख बंद नहीं होगी. He will not feel sleepy while meditation. और उसको फेंक दिया. Then tea plants grew out of the eyelids. उसी eyelids से टी के पौधे बनते. The leaves of these plants, आज भी जो है चाय किसी को यदि स्लीपी फील करता है, if anyone feels sleepy and if he takes a cup of tea, sleep banishes. आज भी नींद भगाने के लिए लोग चाय पीते हैं. जरूर ये लीजेंड्स नहीं होगा. उन्होंने आइलैंड फेंका और उसी से आइलिड्स फेंका और उसी से ट्री प्लांट बन गया. ये दूसरा लीजेंड है टी से संबंध में. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. राजवीर फिर कहा सबसे पहले टी जो है चीन में पिया गया. एज फार बैक एज 2700 BC, ईसा पूर्व 2700 वर्ष पहले चाय पिया गया. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. चाइनीज शब्द लगता है. टी, चाय, चीनी. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. यूरोप वाले इसको ले गए 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. BEVRAG, पेय पदार्थ जो पिया जाता है उसको बेवरेज कहते हैं. BEVERAG, बेवरेज. बेवरेज के रूप में कम, मेडिसिन के रूप में ज्यादा इसको पिया जाता है. The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Mariani Junction पर उनको उतरना था. उन लोगों को अपना कलेक्ट किया उन्होंने. लगेज ट्रेन रुकती है तो हम लोग क्या करते हैं? लगेज वगैरह छोड़ के कूद जाते हैं ट्रेन से. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा लगेज कहाँ है. We collect our luggage, then we get ready to get down the train. As soon as the train stops, we move towards the gate, and with carrying our luggage, we get down the train. ये लोगों ने अपना collect किया luggage. Pranjal's parents were waiting for. The Pranjal's parents had already come to the station in order to receive them. Soon they were driving towards Dhekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. Dhekiabadi की ओर चल रही उनकी कार. प्लेस का नाम है ढेकियाबाड़ी. An hour later, एक घंटे बाद, an hour later, the car veered sharply off the main road. मेन रोड से अलग उतर गई कार.
They crossed a cattle bridge and entered Thekiawadi tea estate. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. ग्रेवल कंकरीले रोड के दोनों तरफ एकड़ एकड़ फैला हुआ था क्या टी बुशेज ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट प्रून्ड प्रून मतलब छटा हुआ कतरा हुआ प्रून मतलब होता है छाटना कतरना प्रून्ड टू द सभी सेम हाइट में प्रून्ड किए हुए थे ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स प्लक मतलब तोड़ना Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. A sprout निकला हुआ, बढ़ा हुआ. वैसे स्प्राउट मीन्स होता है अंकुरित होना. बीज जब अंकुरित होता है तो जमीन से बाहर सैपलिंग के रूप में बाहर आता है. यहाँ पर है पत्तियां को तोड़ लिया जाता है ठीक है फिर वह स्प्राउट होकर आगे निकल जाता है फिर कुछ दिन के बाद उसको तोड़ा जाता है उसी को कुछ प्रक्रिया के द्वारा टी लिव्स चेंज किया जाता है फिर पैकिंग करके भेजा जाता है बाहर या अपने देश में. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. Rajveer बोला कि मिस्टर बरुआ ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना एक लास्ट स्प्राउटिंग पीरियड टी की पत्तियां का निकलना और उसको तोड़ना. इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. यह चलता है मई से जुलाई तक और चाय की अच्छी उपज होती है इस दौरान. यू तो उसके फादर ने कहा मिस्टर बरुआ इसके फादर थे प्रांजल. राजवीर की ये बात सुनकर कहा कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. पहले तुमने अच्छा होमवर्क किया है. प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज. यस मिस्टर बर्मा राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मच मोर while I am here. Yes Mr. Barua, I have done a lot of homework. I have studied a lot about tea and I hope to learn a lot more while I am staying here. जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं और सीखूंगा. तो इस तरह से इस चैप्टर में टी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और उस पर हम कुछ क्वेश्चन इस पर लिख लें. वी हैव स्टिल टाइम लेफ्ट. तो हम दूसरा चैप्टर फिर करेंगे द ट्रीज पढ़ाएंगे. पहले इस पर क्वेश्चन लिख लीजिए. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. नाउ राइट डाउन सम क्वेश्चंस टू बी डन एज होमवर्क.
What are legends about? What are legends about the discovery of tea?
Why did Pranjal's father say that Rajveer seemed to have done his homework? Done his homework. Why did Pranjul, Pranjal's father said that Rajveer seemed to have done his homework. ठीक पढ़ना कि नहीं? ट्री लगता है कि रिमूव कर दिया गया इस बार. डू यू नो? हेलो. यस सर. हाँ, ट्री नहीं पढ़ना है, मिजविल डॉटर नहीं पढ़ना है, फॉग भी नहीं पढ़ना है. तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर देते हैं. मैडम राइट्स द बस. ठीक है? यस सर. हाँ, मैडम राइट्स द बस. अमांडा भी पढ़ना है. कौन? अमांडा. अमांडा. हाँ हाँ, Yes, अमांडा. sir. अमांडा पढ़ाए थे ना? हाँ. ऑफलाइन क्लास में नहीं हुआ था? नो सर. तो वही पढ़ा दें क्या पहले? जो हुआ था अमांडा? नहीं हुआ था ना? 100 ऐसे तो करा दीजिए. 100 ऐसे तो नहीं आएगा. फर्स्ट टर्म का है ये. अमांडा सेकंड टर्म का है. अमांडा एनिमल्स भी सेकंड टर्म में रखा है. टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन ये सेकंड टेल में है. ये तीन पोएम है सेकंड टर्म के. एनी ग्रोगरेव नहीं है. प्रपोजल पढ़ना है. तो शुड वी स्टार्ट अमांडा? यस सर. यस सर. हाँ ठीक. 61 कहीं दूसरी जगह पढ़ाया हमने को याद. अमांडा पोएम है. ये तीन ही पोएम आ रहा है. $61. अमांडा. इसको ये हो गया है. क्वेश्चन देते हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा. जरूर बनाइएगा. इन्हें यहाँ लिख करके छोड़ दिए.
जैसे हम बनाते थे दिखाते तो उसी तरह बना के रखिए, कभी फिर ऑफलाइन क्लास होगा तो देख लेंगे। लिखने का अभ्यास होगा, क्योंकि लिखने ही वाला काम आएगा, दिया जाएगा इस बार की परीक्षा में। अमांडा, अमांडा, who is Amanda? Do you know? कौन है अमांडा? अमांडा is a teenage girl. Is a student like you. As every child feels that she is being controlled and instructed by his or her parents, teachers, and elders unnecessarily. So is the case with Amanda. She feels that she is unnecessarily being instructed by her parents, father or mother. She does not want to be instructed so frequently. She thinks that her freedom is curtailed. She thinks that her freedom is curtailed. So whenever she is given instructor by her mother or father, she is lost in her own imagination. She thinks herself of an orphan. Sometimes she thinks herself of a mermaid. Sometimes she thinks herself of Rapunzel, a princess. She is transported to the land of imagination where there is no one to disturb her, where she is free to do what she likes. So is the case with each and every child. Children think that there should be no one to instruct them, there should be no one to guide them, they should be allowed to do what they like. But the elders, teachers, or the guardians do not want them to do what they like, because a teenager cannot think what is right and what is wrong. So they need the instructions of their elders, their teachers, and parents. But sometimes the parents or the elders or the teachers starts giving instructions more than proper. As a result, the child gets fed up with those instructions, and in order to avoid those instructions, they find their own way. They find their own way in order to avoid those instructions, in order to save themselves from those instructions. Let us say in this poem how Amanda finds her own way to avoid the instructions that are being given by her mother or father. बात समझ में आई? हर टीनेजर को इंस्ट्रक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, एल्डर से, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए गार्जियन समझते हैं, टीचर समझते हैं, या जो भी हो पेरेंट्स समझते हैं कि इसको गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन कभी कभी सीमा पार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इशू किया जाने लगता है, तो बच्चे उब जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शन से बचने का, सही बात है नहीं उस इंस्ट्रक्शन से बचने का अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो इस पोएम में अमांडा भी अपना रास्ता खोज ली है, वो अपने ही विचारों में खो जाती है, कभी कल्पना करने लगती है कोई मरमेड बन गई है, मत्स्यांगना बन गई है,
कभी वह इस विचार में, इस स्वप्न में खो जाती है, वह रापुंजल बन गई है। कभी वह सोचने लगती है कि मैं ऑर्फन हो गई हूँ, मेरा पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तब मैं फ्री होकर के गलियों में घूम रही हूँ आनंद से, पैर में धूल लगा रही हूँ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं है। तो एक्सट्रीमिज्म एक बुरी चीज है। ज्यादा इंस्ट्रक्शन भी सही नहीं है, लेकिन बच्चे को भी सोचना चाहिए कि कुछ तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। विदाउट इंस्ट्रक्शन कैसे हो क्या? देखो, पहला पैराग्राफ में पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन, उसके बाद दूसरा जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो शो करता है क्या चीज, कि कैसे अमांडा उस इंस्ट्रक्शन से बचने के लिए स्वप्न लोक में चली जाती है, अपने लैंड ऑफ इमेजिनेशन में चली जाती है। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की आदत है कि अपना नेल कुतरते रहती है हमेशा, इस तरह से। बहुत बच्चे का आदत है कुतरते रहते, तो पेरेंट देखेंगे तो उसको इंटरफेयर करेंगे, स्टॉप करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपना नाखून मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। कंधे मत उचकाओ अमांडा, इस तरह से कंधे उचकाना, कंधे मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, ऐसे सिकुड़ के बैठ, ऐसे स्लॉचिंग बंद करो, सिट अपराइट, ऐसे सिट अपराइट अमांडा। कंधे मत सिकोड़ो, ना उचकाओ, अपराइट बैठो ऐसे। ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अमांडा की आदत होगी कंधे उचकाने की, नाखून कुतरने की, स्लॉचिंग करने की, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है सीधा बैठो, नाखून मत कुतरो। अब अमांडा इसे सुनती है तो बहुत उसे दुख होता है, वो अपने स्वप्न लोक में चली जाती है। क्या सोचती है? देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड ग्रीन लैंग्वेज पीसफुल। सोचती है कि एक ग्रीन पीसफुल समुद्र है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां का एकमात्र निवासी वही है। देयर इज नो वन देयर, कोई वहां पर नहीं है। और क्या है? वो मरमेड बन गई है। मरमेड, शरीर मछली का और सिर जो है आदमी लड़की का, उसको मरमेड कहते हैं। वो मरमेड बन गई। शी हैज बिकम ए मरमेड। शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड in a peaceful emerald sea where there is no one. She is alone. She is being drifted blissfully, pleasantly by the waves of the sea. बहुत ही आनंदपूर्वक समुद्र की धाराओं के द्वारा वह बहाए ले जा रही है, बह रही है। कोई नहीं हुआ इंटरफेयर करने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला। इस तरह से सेकंड स्टेंजा में अपने को इमेजिन करती है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड which is being drifted pleasantly, blissfully, pleasantly by the waves of the sea. फिर से थर्ड स्टेज है, वहां अगेन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग issued to her by her parents. अब कौन दे रहा है? मदर या फादर? कुछ स्पष्ट नहीं है, कोई होंगे, फादर होंगे या मदर होंगे। Did you finish your homework, Amanda? अमांडा, होमवर्क पूरा हुआ? Did you tidy your room, अमांडा? अमांडा, रूम को क्लीन किया तुमने, साफ सुथरा किया? I thought I told you to clean your shoes, अमांडा। The parents want her to finish her homework. They also want her to clean her room. They also want her to clean her shoes, to polish her shoes.
After going through this stanza, है ना, इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद we come to the conclusion that Amanda shows slackness in her work. She does not keep her room neat and clean. She does not do her homework properly. She does not polish her shoes properly. As a result, she is being given instruction by her parents. After hearing these instructions, she again is lost in her own imagination. She imagines herself to be what? क्या imagine करती है? अब imagine कर लिया, I am an orphan. मैं तो अनाथ, काश मैं अनाथ होती, if I were an orphan. She wishes that she were an orphan. She were parentless. इतना इंस्ट्रक्शन उसने मिला कि माता पिता भी को भी भुला गई. चलो बिना माता पिता के मैं कितना अच्छा होता यदि मैं बिना माता पिता के रहूं. तो what will she be able to do when she is parentless? यदि वो parentless है तो वो क्या कर पाएगी? Yes, क्या कर पाएगी? I patterned soft dust with my hushed bare feet. She will make pattern on the dusty path with her bare feet. अपने नंगे पांवों से वह धूल भरे सड़क पर पैटर्न बनाएगी, आकृति बनाएगी, डिजाइन बनाते हुए चलेगी रास्ते में. As they see the orphans doing while walking on the dusty path. जैसे कि वो ऑर्फन्स को करते हुए देखती है डस्टी पाथ पर चलते हुए. Amanda also wants to do the same thing as an orphan does. As an orphan, what will she able to do? She will be able to make pattern on the dusty path with her bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. She thinks that silence is just like golden, and freedom is very sweet to her. There will be silence when she is parentless. It will be a good thing for her. यहाँ पर मेटाफर है, साइलेंस की तुलना गोल्डन से की गई है और फ्रीडम की तुलना स्वीट से की गई, मधुरता से की गई. तो मेटाफर है, मेटाफर कहाँ होता है? कंपैरिजन किया जाता है. When two dissimilar things are compared on all points, the figures of the speech is said to be metaphor. So for her, silence is as precious as gold. Freedom is very sweet for her. She wants freedom and silence. After becoming an orphan बनने के बाद वह साइलेंस और फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है, वो एंजॉय करेगी. वो कल्पना में खो जाती है, एक ऑर्फन हो गई है और साइलेंस और फ्रीडम को एंजॉय कर रही है ऑर्फन की तरह, एक ऑर्फन की तरह. गलियों में जा रही है, धूल वाली गलियों में खाली पैर, अपने पैर से पैटर्न बना रही है, ज्योमेट्रिकल फिगर बना रही है धूल के ऊपर. Her feet becomes dusty, but there is no one to scold her, to reprimand her for doing so. ऐसा करने के लिए उसे डांटने वाला कोई नहीं है. फिर लगता है अमांडा चॉकलेट बहुत खाती है, इसलिए डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा. अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ. खाती है चॉकलेट? तुम लोग खाते हो चॉकलेट? कोई नहीं बोलेगा, जरूर खाता होगा. यस सर, खाते हैं सर. हाँ, टू मेनी चॉकलेट्स, बहुत ज्यादा चॉकलेट, बहुत ज्यादा चॉकलेट. ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स cause damage to our teeth. The teeth of some children
get damaged because they eat too many chocolates. It is natural that the parents will not allow them to do so. Amanda also likes eating chocolates, and her teeth might have been damaged. So when her parents see her eating chocolates, they stop her from doing so by saying, "Do not eat that chocolate, Amanda. Remember your acne." वो पिंपल जो गाल पर हो जाता है चेहरे पर, उस एक्ने कहते हैं, एक्ने. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? When Amanda is being scolded for eating too many chocolates, she stands with her head down. She is not looking straight into the eyes of the person who is scolding her. सिर झुका के खड़ी है, उस व्यक्ति की आंखों में नहीं झांक रही है कि उसे डांट रहे. तो वो व्यक्ति, चाहे फादर हो या मदर, उसको बोल रहे हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी ओर देखोगी, व्हेन आई एम आस्किंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं या रही हूं, तुम मेरी ओर देखो. व्हाई आर यू स्टैंडिंग विथ योर हेड डाउन, सिर लटका कर क्यों खड़ी? जब ये डांट पड़ी तो अमांडा फिर कल्पना लोक में चली गई. शी इज लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेशन. क्या इस बार क्या कहती है? आई एम रापुंजल. अब रापुंजल कौन था? थी रापुंजल वाज ए प्रिंसेस. शी वाज कैप्चर्ड इन ए टावर by a witch. She had long hair. He opened the plate of her hair, अपने बाल का जूड़ा को खोल दिया, and allowed her hair to fall freely through the window of the tower, so that a prince climb up the tower with the help of the long hair, using it as a rope, and set her free. रापुंजल एक प्रिंसेस थी, इसको एक जादूगरनी ने कैद करके रखा था टावर में. उसका बड़ा बाल थे उसके बड़े बड़े. अपने जूड़ा को खोल दिया और बाल को फ्रीली नीचे गिरने दिया, ताकि एक राजकुमार उस बाल को रस्सी की तरह यूज करते हुए उस तक पहुंच गया और उसे फ्री किया, आजाद कराया. तो रापुंजल बन करके अमांडा कैद रहना चाहती है. कहा? एक टावर में. लेकिन रापुंजल की तरह अपने बालों को नीचे गिराएगी नहीं. सो कहती, आई विल नॉट अलाउ माई हेयर फॉल फ्रीली थ्रू द window. Why? Because he does not want any prince to come to her to set her free. She wants to stay there forever, because in the tower she thinks that there is a lot of peace, and she wants to enjoy peace and loneliness in the tower. That is why she does not want to. She wants to be Rapunzel. Rapunzel तो बनना चाहती है, because when she becomes a Rapunzel, she will be in a lonely tower. There will be no one there to disturb her. But as Rapunzel had done, she would not allow her hair to fall through the window, because she does not want any prince to come to her to set her free. She wants to remain there forever, because in the tower she thinks that there is a lot of peace and tranquility, and she wants to enjoy loneliness and peace there, staying there. बात समझ में आई इस स्ट्रेंजर? I am Rapunzel. I have not a care. Life in the tower is tranquil and rare. ये टावर की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही शांतिपूर्ण, ट्रांक्विल होता है और रेयर होता है ना.
I will certainly never let down my bright hair. आप समझ में आया कि अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं गिरने देगी। रापुंजल ने तो गिरा दिया था, लेकिन वो नहीं गिरने देगी। क्यों नहीं गिरने देगी? क्योंकि कोई किसी नहीं चाहती है कि उसके बाल को रस्सी बना करके कोई उसके तक पहुंचे, उसको सेट फ्री करे, उसको आजाद करे। आजाद होना ही नहीं चाहती, वहीं पर आना चाहती है। क्योंकि टावर जो है ट्रांकुल और रेयर है, और ट्रांकुलिटी उसे चाहिए, शांति चाहिए। ट्रांकुलिटी मीन्स पीस, पीस चाहिए, लोनलीनेस चाहिए उसे, पीस और लोनलीनेस। शी नीड्स पीस एंड शी desperately needs peace and loneliness, and only tower can provide her with these two things. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking, चेहरे पर उदासी का भाव लाना। अरे सल्किंग बंद करो अमांडा। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. तुम बहुत मूडी हो अमांडा। फिर डांट पड़ रहा है। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Anyone think that I nag मतलब टॉर्चर करना, चिढ़ाना, टॉर्चर करना। अमांडा पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, सोचिए। डांटने के बाद सोचते हैं कि she should look cheerful, she should not she should not allow sadness appear on her face. उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि चेहरे पर सैडनेस अपीयर नहीं हो, वो चीयरफुल दिखे डांट खाने के बाद भी। क्योंकि इफ शी लुक सैड, द नेबर्स विल थिंक दैट अमांडा's parents have been torturing her very much. So, is it right for the parents to want her to do so? क्या पेरेंट्स के लिए उसके लिए ऐसा कराना सही है? If anyone is scolded, it is natural that he will feel sad and his sadness will appear on the face. How can one be happy and cheerful if one is scolded severely, as Amanda is scolded by her parents? But her parents want her not to be sad. She should look cheerful always. She should always look cheerful. I do not think what her parents is doing is right. समझ में आया? अमांडा, समझ आया तुम लोग? एक दो क्वेश्चन इस पर भी लिख लीजिए। अमांडा, why does Amanda want to be, why does Amanda want to be a mermaid? And orphan. Why does Amanda want to be a mermaid and an orphan? Who was Rapunzel? Who was Rapunzel?
who was Rapunzel? Why does Amanda want to be Rapunzel? Why does she not want to let down her bright hair? बस सुन लीजिए। अगले दिन इसको शुरू करेंगे। मैडम राइट्स द बात शुरू करें। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में नेकलेस हो गया था, हो गया था। एनीबॉडी? नेकलेस नहीं No, हुआ है। sir. ठीक है, नेकलेस, हाइक ड्राइवर एंड गोली, ये तीन तो इसमें है और बाकी उसमें। ठीक, लिख लिया? Yes, sir. ठीक, गुड नाइट। Thank you, sir. ऑलराइट। तुम कौन स्कूल में पढ़ते? मदर टेरेसा। तुम? मदर टेरेसा। दोनों? ऑनलाइन चलता है? यस सर। इंग्लिश हो रहा है पढ़ाई? इंग्लिश हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। क्या पढ़ा? उसमें फुटप्रिंट वाले के चैप्टर चल रहे हैं।
Okay.